Okay, so in the last class, we discussed about different types of error: systematic error, random error, and gross errors. And in today's class, we will try to understand how to do operations of error, means how to solve it in terms of numericals or problems that we encounter in errors. Today, we will study about addition, how to solve addition and subtraction of error, multiplication as well as division of errors. So we'll learn that it's a very important topic, errors. In this particular chapter, error and dimension both are very important topic. One question you can expect in JEE Mains as well as NEET, and even in school examination you can expect questions from dimensions as well as errors. So today we will try to understand the basic way of solving errors or doing problems related with it. Okay. So before I start uh, the problems, let us discuss the formulas or calculation in errors. Okay. We have already discussed what is absolute error. There is another term called mean absolute error. So I'll just explain that and then move to the calculation of errors. Mean absolute errors. What is the meaning of mean absolute error? In fact, I told you that we found out what is a mean. A mean was nothing but, say, a1 plus a2 plus a3, say, divided by n up to n times. Okay. And when we tried to find out the absolute error was something like delta A equals to, say, this one is a mean. So a mean minus a1, a mean minus a2. So this will give you delta a1, delta a2, etc. Okay. And when we talk about the mean of these absolute errors, so mean absolute error, then in that case we will have, suppose, delta a3 equal to am minus a3. So what we'll do is delta a absolute error is equal to delta mode of delta a1 plus mode of delta a2 plus mode of delta a3 divided by, if you have n number of terms, then divided by n. So if we have 3 terms, then divide by 3. So this is how we find out mean absolute error. Okay. And in the top you will give a bar. So this bar will represent mean absolute error. Absolute error, how can I understand? Because it is in mode, because it cannot be negative. So that's why we are writing it like delta a1 plus delta a2 plus delta a3, just like that. Okay. Now, so this is the formula. You can note it down. Note it down. Delta A bar is equal to delta A1 mode of delta A1 plus mode of delta A2 plus mode of delta A3 divided by, say, 3. If you have 5 terms, then 5. If you have 10 terms, then 10. If you have n terms, then divided by n. Okay. Okay. Now we will move to the calculation in errors. Error in sum, error in difference, error in product, and error in division. So how to do calculations in error? This is very, very important topic, calculation in errors. So if you have written this, I'll remember the video is being recorded and this video will be available 4 to 5 hours after the class ends, after the live class ends. So after 4 to 5 hours, this video will be available in TeachMint app, and you can watch that video. It will not be deleted. So you can watch the video, you can download it. Sometime what happens, there is little lagging of sound. Sound may come earlier, sound may come, or sound may lag behind the video little bit, 30 seconds maybe, but it should not be a problem as far as just revision is concerned, because you have already attended the live class, so it will not have any problem even there is lagging. But I have complained to the technical team, so they will look into that. So otherwise the video quality is good. You can see the video, you can download the video and keep it for reference. If you forget sometime, what happens, if you have any doubt regarding any concept, you can refer to the video again and you can understand.
So this is one facility that we are getting in this particular app. Okay. Okay. Now going back to the topic, calculation in errors. Calculations in errors. Okay. First of all, error in sum. Error in sum. Error in sum. Suppose we have x equal to a plus b. So here a is one term, b is another term. So x equal to a plus b. And suppose delta a is equal to error in measurement. Error in measurement. Delta b also is error in measurement of b. Okay. So delta a is error in measurement of a and delta b is error in measurement of b. And delta x is error in calculation of x. Delta x is equal to error in calculation of x. So in that case, the maximum possible error will be delta x equal to plus or minus delta a plus delta b, delta a plus delta b. Okay, so this will give you maximum possible error, that is delta x equal to delta a plus delta b. Remember here delta a plus delta b means we are adding the errors. Suppose, for example, suppose the length of this board is 2 meters, but my measurement tells that it is 2.01. So here 0.1 is the error that I am getting. Okay, 0.1. 0.01 is the error that I am getting. So delta A actually means 0.01. And similarly, again I am doing a measurement for something. Okay, then again I am getting something like 2.02. So 0.02 is again error in measurement of B. So 0.02 is delta B. Okay, now what is the total error? Total error is delta x. Delta x equals to plus or minus delta a plus delta b. Achha. Now we will try to find out percentage error in the value of x. Percentage error. Percentage error in the value of x. So what is the percentage error in the value of x? And that is nothing but this value delta a plus delta b divided by a plus b. And what is a plus b? A plus b is nothing but the original value. A plus b is the original value. Okay. So multiplied by 100%. Because we are finding out percentage error in the value of x. So our error, total error is plus or minus delta a plus delta b. Now that delta a plus delta b divided by a plus b. What is a? A is the original value. Delta a is the error. Similarly, b is the original value. Delta b is the error. So here a is nothing but this 2 meter, because 2 meter is the original length of the board. But why when I measured it, it was 2.01. So my error was 0.01. So that 0.01 is actually delta a. Similarly, if the original value of this board is 2.2 and my measured value is 2.1, then what is the error? 0.1. So that 0.1 is the value of delta b, and 2.1, sorry, say 2.2 is the original value. So 2 is the original value, this means b is actually 2. So this is how we calculate percentage error in the value of x. So kindly note it down, and then I will move to the error in difference. In fact, error in sum and error in difference is as it is, very same. Just instead of a plus b, you will have a minus b. That's it. So in that case, ऊपर में numerator में when you find out percentage error in the value of x, in the numerator you will have delta a plus delta b
divided by a minus b. Remember, even when you are doing error in subtraction or error in difference, on that time denominator will have a minus b, but numerator will stay same, delta a plus delta b. Why? Because delta a plus delta b, remember, is the total error in the measurement. So that's why it will always be added. Total error is always added. So total error divided by here, if it is a minus b, then the denominator we will have a minus b. So I can write it here only. Error in difference will be x equal to a minus b. In that case, our formula will become percentage error. Percentage error formula will be delta a plus delta b by a minus b multiplied by 100. So this will be percentage error in case of difference. Error in difference. So you can note it down. Over. Okay, let me rub it, and then we will study error in error in division and error in multiplication. Is the video and sound clear to everybody? Okay. See, this is the study material that you are supposed to get, and I am solving. I will be giving questions from this study material only, so that till the time you get the study material, on that time we will have completed some questions, and I'll also upload questions of this study material in the app. Okay, so in the study material section you will get some questions for dimensions and error. You solve it and submit it there only. Okay, now error in product. Error in product. What is error in product? Suppose x equal to a into b. Suppose x equals to a into x equals to a into b. Okay. So delta a is the error in measurement of a. Delta a is equal to error in measurement of a. Delta b, again same. Hello. Error in measurement. Error in measurement of b. Okay, so delta a is the error in measurement of a, delta b is error in measurement of b. Okay, and in that case, what will be the product? X equal to a into b. But before that, say delta x is the error in the measurement of product of a and b. So error in measurement of a into b. Okay, so what will be the formula? How it will look now? Delta x is equal to delta a by a plus delta b by b. Interesting, very interesting. X equal to a into b.
But what the result we are getting? Delta x equal to delta a by a plus delta b by b. Now I have told you perhaps in the earlier class, when we multiply or when we find product in case of error, the solution will contain addition. So A into B is delta A by A plus delta B by B. Remember, you perhaps know that in algebra, what is the meaning of multiplication? Multiplication is nothing but it is a process of addition, easier process of addition. So here, in case of error, you practically find that multiplication is nothing but error addition. Okay. So here, what we are getting? Suppose delta A is the error in measurement of A, delta B is the error in measurement of B. So that is why delta A by A plus delta B by B. So total error in measurement of A into B is delta x equal to delta A by A plus delta B by B. Now, if I, sorry, here delta x by x also, because delta x is error in measurement of A into B and x is the original value. This means, suppose we have two value, A equal to 2 and B equal to 3. So A into B is 2 into 3. Okay. But if I say that delta A equals to 2.1 and delta B equal to 3.2. So what is that? This means delta A is 2.1 and delta B is, in fact, in this case, delta A will be, say, 2 minus 2.1. 2 minus 2.1 is nothing but 0.1. And here, delta B, suppose 3 minus 3.2 is, say, 0.2. So delta 1 and delta A and delta B are nothing but errors. So 0.1 and 0.2 are nothing but errors. So original value divided, here you can see the error divided by the original value. So error is 0.1 divided by A is 2, and similarly your error is 0.2. So delta B is 0.2 and B is 3. So divided by 3. So this is how we find out error in product. Okay. So this is the formula for it. দেখা ছিল দেখাচ্ছে না 1 2 দেখাচ্ছে না 4 out of 6 1 ও বাবা তো বললো যে আমি দেখছি okay. Next, if you have written this particular formula, you can write down delta x by x equal to delta A by A plus delta B by B. And when we solve the numericals, you will easily understand what is that, how we solve it. Okay. Now, next is error in division. I am writing it here. Error in division. Error in division. Okay. Suppose x equals to A by B. Interesting again. X equals to A by B. Then this formula again will become delta x by x equal to delta A by A plus delta B by B. So although we are doing finding out error in division, but the formula remains same. Delta x by x equal to delta A by A plus delta B by B. Of course, you can keep this in the bracket and I'll introduce plus minus sign. Plus or minus sign. So that will be better. So even in case of error in division, what is A and what is B? A and B are the original values. And what is delta A? Delta A is the error. Delta B is the error. So even if it is division, x equal to A by B, the formula for this will remain same. In fact, even in error in product, we can write this as, if you want to find out, you can actually write down, just add one thing here. Delta x by x equal to plus or minus. We keep this in bracket.
So plus or minus delta A by A, because your error can be positive or negative. So that's why I have kept a plus or minus sign outside the bracket. Same thing for division as well. So when you find out error in product or error in division, the formula is basically same. Similarly, when you find out errors in addition or errors in difference, the formula remains same. Okay. So just you have to keep that in your mind. You can note down the formula. Now we have seen addition, subtraction, multiplication, and division. Next is error in power. Error in power means exponential. Error in power. Kindly note it down quickly. Note down the formulas. Tell me if you have written it, okay? হ্যালো হ্যালো তোকে দেখাচ্ছে না তো এখানে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে হয়তো কোনো এমনি কোনো কারণে দেখাচ্ছে না Over. একবার এখানে জিজ্ঞাসা করে নিই তারপর তো বলতে পারবো Okay. Actually, Tathagat's name is not shown here because I am able to see here, because whoever is attending the class, it is in the side. I am able to see the list of the students: Srijani, Madhurima, Deep, Shagnik. Okay, but Tathagat's name is not shown here. Okay. Now let me solve a few problems. Okay, examples, so that you can understand how to solve this error. Okay, while undergoing the class, if somebody tries to ask me a question, you can message through this app. I will be able to see the message, or that is the best way. Otherwise, there is another WhatsApp number of me. You can also message there. But if you WhatsApp at this particular number, I won't be able to see it properly because I have to get out of this screen. So that is difficult. So better if you want to ask any question, you can message through this app. So I will be able to see the question, or you can directly unmute your voice and you can ask question directly as well. Okay. Okay. So let me start with a few questions on errors. হ্যাঁ বাবু তোমার তো এই মাসের টাকাটা এলআইসি তুমি আজকে নিয়ে যেতে পারো Okay, write down one question. Okay. আমি তো এই বাড়িতে থাকবো না বিপ্লবের কাছে two rods have length. Two rods have length. আমি ওই বাড়িতে যাব Two rods have length. তুমি 2950 তো এই 50 টাকা 7.8 plus or minus 0.2. 7.8 plus or minus 0.2 meters. And 12.3 plus or minus 0.1 meter. Okay.
two rods have length 7.8 plus or minus 0.2 meter, and second rod is 12.3 plus or minus 0.1 meter. Calculate their combined length. Calculate their combined length. Combined length with error limit. With error limit. So this was the question. Yes. Okay. Now we will use the concept of sum of the errors. Calculation for sum of the error. So we have two rods. One rod is, say, L1 equals to this measurement and L2 is equal to this measurement. Now what is 7.8 here? 7.8 is nothing but A. And what is 0.2 here? It is nothing but delta A. And what is 12.3 here? That is B. And what is 0.1 here? That is delta B. So we want to find out the combined length with error limit. So combined length means L1 plus L2. That is equal to 7.8 plus or minus 0.2, then plus 12.3 plus or minus 0.1 meter. Now you will always add A to A, means integer will be added together and the errors will be added together. Okay. So here 7.8 plus 12.3, okay, plus or minus 0.2 plus 0.1, because error has to be added together to find total errors. Okay. So 7.8 and 12.3, that will be 20.1. Okay. So your answer will be 20.1 plus or minus 0.3. So that is your answer. So what is the combined length? Combined length of the two rod is 20.1 plus or minus 0.3. Now what is the meaning of this? This means that the total length of the rod is 20.1 actually. And what is 0.3? 0.3 is the error in measurement. So if there is any kind of error in sum, then it will be something like plus or minus 0.3. यानी कि ये 0.3 प्लस भी हो सकता है, 0.3 माइनस भी हो सकता है, और 20.1 is the combined length of the rod. Note down. Is it clear to everybody the way I solved? Okay, so it was very easy thing. Okay, next question you will do. I'll give you the question. It's very easy. You can do it orally. So we will always start with some basic elementary problems and then gradually move to higher level of problem. That is the way of learning physics. Okay. So these are elementary, very easy things, just addition. Okay. So now you can write down the next question. Next question. Write down. The sides of a rectangle are, the sides of a rectangle are 8.272 plus or minus 0.5 meters. 8.272 plus or minus 0.5 meters and 29.91 plus or minus 0.2 meters. So first is 8.272 plus or minus 0.5 meter. Next is 29.91 plus or minus 0.2 meter. Find their sum with error limits. Find their sum with error limits. Now, what is the meaning of error limit?
जो हम लोग लिख रहे हैं ना प्लस और माइनस इतना आया, प्लस और माइनस 0.2 0.3, that is error limit. So find the sum with error limits. Okay, so this is rectangle, so length is this one and say breadth is this one, whatever. Okay, so here we have to find the sum of length and breadth. So obviously we are going to find L plus D, that is just solve by yourself and tell me the answer. Solve by yourself, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐड ही करना है खाली, add and tell me. Error in percent, Tathagato have asked a question, error in percent, will come to it when you solve the numerical. I'll again repeat it on that time. Solve your answer and tell me. Yes, tell. Yes, 38.182 plus or minus 0.7. Yes, so that will be your answer. Others? Over? Okay. So that's very simple thing. Just you have to add it. Okay. Now we'll move to another problem, uh, which is based on multiplication and division. Let us see how we can go. Okay. Write the question. Question number 3. Write down a capacitor of capacitance. A capacitor of capacitance C equals to, a capacitor of capacitance C equal to 2.0 plus or minus 0.1 microfarad. You don't have to understand what is microfarad right now because मैं उसका explanation दे दूंगा. You will study this concept in class 12, but the problem is there. So a capacitor of capacitance C equals to 2.0 plus or minus 0.1 microfarad, and potential difference is, and potential difference is 20 plus or minus 0.2 volt. Potential difference is 20 plus or minus 0.2 volt. Okay. What is the charge on the capacitor? What is the charge on the capacitor? There is a formula to find out capacitance, that is Q equal to CV. You will study this formula in class 12. Just write down now. Q equals to CV. Q is the charge, C is the capacitance, and V is the voltage or potential difference. Okay. We really don't bother about what, I mean, just knowing the term is sufficient right now in class 11. Formula is important for me because we are going to solve it now. Okay. So what is the charge on the capacitor? So charge means I want to find out Q, and Q is nothing but CV. Now this is CV means C into V. So what will be the formula for us? Delta Q by Q according to the formula of product of error. Q equal to CV will mean del Q by Q equals to del C by
C plus del V by V, because we all know that even when it is product we will add. So del C by C plus del V by V. Okay. Now from the question values given here, what is del C? Del C is 0.1. What is del V? Del V is 0.2. And what is C? C means 2. And what is V? V means 20. Okay. Now here microfarad is given. Let me tell you what is microfarad. This is actually unit of charge. Micro means order of -6. Okay, 1 microfarad means order of -6 farad. Farad is the SI unit of capacitance, which you will study in class 12. So order of -6. Okay, 1 micro means order of -6 farad. Okay, now we will first solve this particular value Q equal to CV. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं Q का. तो C into V, what is C? 20 plus or minus 0.1 and microfarad means order of -6. तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं. So C is 2, C is 2 and what is V? V is 20. Okay, and since it is microfarad, so we will multiply it by order of -6. So our answer will be 40 into order of -6. So 40 into order of -6 coulomb. So we have got the value of Q. Now we have got the value of Q. Q equal to C into V. C is 2 and V is 20. So 2 into 20, because the SI unit of charge is farad. Okay. So not charge, sorry, here capacitance is farad. So here microfarad means order of -6. So I have multiplied order of -6. So we have got the value of Q as 40 into order of -6. Now what is Q? Here we have to see, we have to find out what is the charge on the capacitor. Means we want to find out actually Q, what is the charge on the capacitor. Okay, so we'll check out gradually. Now we will use this particular formula, del Q by Q equal to del C by C plus del V by V. Okay, now what is del C? Del C is 0.1. What is C? C is 2 plus what is del V? Del V is 0.2 and what is V? V is 20. Okay, so just solve this. 0.1 by 2 plus 0.2 by 20. Solve करो इसको, कितना आ रहा है देखो. Solve it. Now here you can see del Q by Q. Q we already know. Q is 40 into order of -6 and then you solve this one. How much you are getting? From there we will get the value of del Q. Huh? No, you don't solve like that in error basically. So here 0.1 divided by 2, this means, what is this? This is 0.05. 0.1 divided by 2, that is individual, you solve it individually. 0.05 plus what is 0.2 divided by 20? It will be 0.01. Okay, so 0.05 plus 0.01. So after solving it, what we are getting? This is equal to 0.06 plus or minus. Okay, so plus or minus 0.06 we are getting. Now what is del Q in that case? You can easily find out what is del Q. So del Q is equal to 40 into order of -6 multiplied by 0.06. Okay, so let us solve this. 40 into 0.06 will be 6 for the 24. So this means we will have 2.4. Okay, so 40 into 0.6, 0.06. So we will get 2.4 into order of -6 into order of -6. So that is what we are getting del Q. तो अभी हमको del Q का वैल्यू देखो मिल गया है, प्लस और माइनस ऑब्वियसली, प्लस और माइनस 2.4 into order of -6. Okay.
Now see, what we have found out is del q. What is the value of del q? Del q is plus or minus 2.4 into order of minus 6. This is actually error. And what is q? Q we have found out this one. So actually the error, what is the charge on the capacitor? What is the charge on the capacitor? Charge on the capacitor is q equal to this value, that is 40 into order of minus 6 plus or minus 2.4 into order of minus 6. So order of minus 6 common, so 40 plus or minus 2.4 into order of minus 6. So that is the value of q. Don't add it because 40 means q and 2.4 means del q. Remember it. So order of minus 6 is common here. Clear everybody? You can ask me if you have any doubt. और एक चीज याद रखना, अभी आप क्लास 11th में हो, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. If you want to score high in JEE Mains or NEET, your calculation must be fast as well as strong. In physics, you need plenty of calculations. So you can note it down, and if you have any doubts, you can ask me. This type of questions does come in JEE Mains as well as NEET. Any doubts, anybody? So first of all, what we did, this formula Q equal to CV, then we found out the value of C into V. C is 2, V is 20. Just यहाँ पर order of minus 6 था, माइक्रोफैराड को फैराड में convert किया. So that's one. So Q का value हमने यहाँ पर निकाल दिया. We have got the value of Q here. Then the formula is applying the rule of error for product. Del Q by Q equal to del C by C plus del V by V. We all know what is del C. So del C here is 0.1. By C, C is 2, and what is del V? Del V is 0.2 and V is 20. So इसको solve किया हमने, आया plus or minus 0.06. And what is Q? Q we have already found out from here. So now del Q we are getting plus or minus 2.4 into order of minus 6. Now we have got del Q. Then what is actually charge? So charge is this value. This is the original value and this is the error. Remember, del Q is error and Q is the original value. So original value plus or minus the error. So 2.4 into order of minus 6. So order of minus 6 is common. So इसको मैंने बाहर ले लिया. And then 40 plus or minus 2.4. I repeat, don't add it in the answer. You should not add. That is a wrong way. यहाँ पर कभी add मत करना इसको, because 40 plus or minus 2.4 means 40 is the actual value of the charge, and 2.4 plus or minus 2.4 simply means it is the error in measurement. So it can be plus 2.4 or it can be minus 2.4. That is the error in measurement. Okay. So remember, this is what we mean charge with error limit. So whenever the question asks you find the answer with error limit, so first you have to find out the error. Okay. So we have found out the error here. Error was del Q, and then it was Q plus del Q. Remember, this is nothing but Q plus del Q. This is Q plus del Q. Clear, everybody? Any doubts?
Okay. Now I'll give you another question which you try to solve by yourself. Okay, write down next question. A potential difference, a potential difference, a potential difference V equals to V equals to 10 plus or minus 1 volt. 10 plus or minus 1 volt. A potential difference V equal to 10 plus or minus 1 volt is applied across a resistance, across a resistance, applied across a resistance of, so your resistance is 5 plus or minus 2 ohm, 5 plus or minus 2 ohm. Calculate current, calculate current with error limits, error limits. Calculate current with error limits. So V is given, R is given. You have to find out current. A potential difference V equal to 10 plus or minus 1 volt is applied across a resistance of 5 plus or minus 2 ohm. Calculate the current with error limits. Okay. Now, you know what is Ohm's law. You studied in class 10th. Ohm's law is V equals to IR. So we have to find out current. So my formula is I equal to V by R. Okay, this means del I by I equals to del V by V. Okay, plus del R by R. So this is a case of division. The formula remains same. I equal to V by R. So this means del I by I equal to del V by V plus del R by R. नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में सोचते हो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा. नथिंग लाइक दैट इन एरर. जस्ट v मींस del v by v प्लस डिवाइडेड बाय r है तब भी आप ऐड ही करोगे उसको del r by r. ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del v here. Del v is 1, del r is 2, v is 10 and r is 5. So solve करो इसको and then of course I equal to v by r. So you find out the value of I and solve it. Just like the earlier problem we did. आप लोग खुद solve करो इसको and tell the answer.
Over. Tell the answer. Yes, very correct. 2 plus minus 1. This means the value of I is 1 and the value of del I is the value of I is 2 and the value of del I is 1. Yes, correct. Good. चलो 4 नंबर मिल गया तुमको नीट का एग्जाम में. This question had come in 2016 NEET exam. Others, Srijani and Tathagat and Deep, Sagnik. Okay, 2 plus or minus 1. Okay. Okay. Remember, in a competitive exam such as JEE Mains or NEET, you need to have two things. As far as physics is concerned, you need to have two things. In fact, not only physics, in fact, even in chemistry, you have the same way of learning, even in mathematics. The only difference that physics makes with other subjects like chemistry or mathematics, biology is mainly a theoretical subject. Mainly, if I talk about the subject physics, here you need to have three skills. If you really want to score high marks in physics, you need to have three skills, not one skill, three skills. One skill is highly or good understanding of the concepts, means theoretical concepts. You must be very good in theoretical concepts, and your theory concepts will be developed by mainly NCERT book. And of course, when you get the study material, you will understand that there are techniques for problem solving. So every topic has a technique of solving the problem. So you will get that through our study material, and of course we will solve in the classroom different type of problems, how to solve a problem. That is one skill, understanding concept. Second is how to apply the concepts. हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अप टू क्लास 9-10 व्हाट यू लर्न इज ओनली बेसिक थ्योरी. ओके, बट इन क्लास 11 आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, suppose second law of motion. So just knowing the second law of motion is not sufficient. In a board examination, they will ask you questions. In any normal boards, they will ask you question like define Newton's second law of motion and derive the expression for the second law, how it is connected with change in momentum. But in an entrance examination like NEET and JEE, you will be asked question on the basis of how you are able to apply the knowledge of Newton's second law and solve a problem. So that is the difference that is created in physics. Not only you have to know the concepts, you have to understand how to apply the concept and solve a problem. And third thing is your calculation skills, your mathematical understanding. Okay, means mathematical understanding as well as your calculations must be very fast, because in NEET you have 45 questions that has to be answered. See, total 180 questions has to be answered in 3 hours. That is not a joke. 180 questions in 3 hours. 45 questions in physics, 45 in chemistry, and 90 questions in biology, zoology, botany combined. Similarly, in JEE Mains, you have 75 questions, 25 physics, 25 chemistry, 25 mathematics. So you have to solve 75 questions in 3 hours. Again, the difference in the standard of the question in JEE Mains and NEET as far as physics chemistry is concerned is in JEE Mains you will have tougher question, longer question. In NEET you will have
shorter questions, comparatively easier questions, but shorter question. But still you have to solve 45 questions in physics as well as chemistry. So you need to have very fast calculation skills. So that is why it is always advisable कि कुछ कुछ चीज होता है ये घर में आप वो करके रखो, मतलब कि लाइक स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट ए स्क्वायर रूट। अब एग्जाम में जाओगे कुछ कुछ स्क्वायर रूट आप याद रखो, ठीक है, कि लाइक 13 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का कितना होता है, 15 16 17 18 लाइक दैट। तो इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप, और देन ऑफ कोर्स यू शुड नो बेसिक थिंग्स लाइक एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, रूट कैसे निकाला जाता है, बिकॉज इन फिजिक्स यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू हैव टू फाइंड आउट रूट। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो फिर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। कहीं अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता, एक्सपोनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू हैव कैलकुलेशन स्किल्स एज वेल एज द कनेक्टिविटी विथ मैथमेटिक्स। जैसे मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था अपने स्टेटस में, और ऑब्वियसली एक महीने में टोटल 8 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन का जो आंसर दे पाएगा जो स्टूडेंट, उसको एक बुक गिफ्ट किया जाएगा। वो बुक कोई ऐसा वैसा किताब नहीं है, दैट बुक इज मेनली बेस्ड ऑन, उस बुक में इंडिया के कुछ टॉप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने कैसे अपना सक्सेसफुल जर्नी कंप्लीट किया फॉर आईआईटी जेई, फॉर नीट, फॉर जेई मेंस एक्सेट्रा, दैट इज प्रोवाइडेड। उनका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, एंड कुछ एक्सपर्ट्स व्यू है कि आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू इंप्रूव योर स्किल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। तो वो बुक है। तो वहां पर देखो मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा वो एनसीईआरटी के ऊपर से ही दूंगा मैं क्वेश्चन। रिमेंबर, आधा से ज्यादा ट्यूटर्स लोग तो एनसीईआरटी पढ़ाते ही नहीं है, और स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है। एनसीईआरटी के ऊपर कोई किताब नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर आप फिजिक्स का एनसीईआरटी, आपने अगर 90% कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया ना एनसीईआरटी फिजिक्स का, तो लेट मी टेल यू, आपका नीट में बहुत हाई स्कोर आएगा, आपका जेई मेंस में बहुत हाई स्कोर आएगा। इवन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई एडवांस, आईआईटी जेई, तो उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। लेकिन एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया है, तो एज आई मूव अलोंग द एनसीईआरटी बुक इन द नेक्स्ट चैप्टर, आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बुक्स। लेट मी टेल यू, 90% students do not know how to study NCERT books. It is very important that you know how to study NCERT books. तो आधा से ज्यादा स्टूडेंट को ये पता ही नहीं रहता कि NCERT books कैसे पढ़ा जाता है। So I'll also explain you how to read NCERT books, how to study NCERT books, and how the questions are picked up from NCERT. नीट में क्वेश्चन पिक किया जाता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपके NCERT से अंदर से क्वेश्चन दे देगा वो, जेई मेंस में दिया जाता है, ठीक है। तो और लेट मी टेल यू दैट इज द फनी थिंग दैट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर वहीं से बनता है, जेई मेंस का पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर से निकाला जाता है, जेई एडवांस का भी ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस उसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से लिया जाता है। नीट तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। आई विल टेल यू दैट इन बायोलॉजी, जिसने एनसीईआरटी का 11 12 का एनसीईआरटी पूरा का पूरा वो कर लिया ना, मतलब कि उसको पता है कि कौन सा लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो लेट मी टेल यू, वो 90 क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी का, उसमें 85 क्वेश्चन वो करेक्ट करके आ सकता है। 85 क्वेश्चंस करेक्ट करके आ जाएगा 90, तो उसका फिर ऑल इंडिया रैंक जो कितना ऊपर जाएगा। सिमिलरली इन केमिस्ट्री ऑल्सो, वेदर इट इज जेई मेंस एंड नीट, आपने अगर एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको पता है ना कि कहां से क्या निकाला गया है एनसीईआरटी में, कौन सा चैप्टर में किस लाइन में क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, ये सब अगर आपको ठीक से पता है एकदम लाइन टू लाइन, तो लेट मी टेल यू केमिस्ट्री में भी आपका बन जाता है। अब फिजिक्स में ना, फिजिक्स एक एक्चुअली बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी का। तो वहां पर भी लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व क्वेश्चन रहता है, वहां से कभी कभी जेई मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है उठा के, बट स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में एनसीईआरटी की किताब से ही दिया गया है क्वेश्चन, बिकॉज दे नेवर रीड द एनसीईआरटी बुक। एंड समटाइम व्हाट हैपेंस, जो ट्यूटर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड ट्यूटर्स बाहर में, उनको ये सब चीज के बारे में पता नहीं रहता कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन निकाला जाता है, या कैसे एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट्स जो है एबीसीडी किताब पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी का किताब आपने अगर कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में, तो आपका सीबीएसई, जेई मेंस, नीट, इंडिया का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनी एग्जाम यू कैन स्कोर विद वेरी हाई marks, you can be successful in any exam. But the problem is, जो स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी थोड़ा कोशिश करते हैं फिजिक्स पढ़ने का, उनको डिफिकल्ट लगता है, बस छोड़ देते हैं, नहीं ये एनसीईआरटी नहीं समझ आता। ये किताब, लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी इज रिटन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th।
It is written for the students of class 11th and 12th. It is not written for a college graduate student. It is written for 11 12 students. तो अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आता, इसका मतलब आप टीचर से पूछो। अगर कुछ, जैसे हर सब्जेक्ट में हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हर टीचर हमारे इंस्टीट्यूट में आपको एनसीईआरटी थरोली कराएगा, ठीक है। तो आप घर में एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, एक लाइन आपको समझ नहीं आया तो आस्क द टीचर कि ये चीज मेरे को समझ नहीं आया एनसीईआरटी से। इफ पॉसिबल घर में अपना एक डायरी मेंटेन करो हर सब्जेक्ट के लिए, कि उसे एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स को लिखो, एक एक पॉइंट्स निकालो, रीडिंग करो, रीड द एनसीईआरटी एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू फाइंड इन एनसीईआरटी। लेट मी टेल यू, एज वी गो अलोंग इन फिजिक्स, मैं आपको एक एक लाइन अंडर एक लाइन बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो इंडिया का किसी किताब में नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट दैट कॉन्सेप्ट इन एनी बुक इन इंडिया, एनी बुक इन इंडिया नहीं मिलेगा आपको, कोई किताब में नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी का वो स्पेशलिटी है, ठीक है। अब रख लो वही क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ गया, स्टूडेंट क्या बोलेगा, वो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जबकि उसने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। वो किसको पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है पोल्टूदा का किताब, बिल्टूदा का किताब, ये सब किताब पढ़ता है वो, और जो असली किताब है एनसीईआरटी का उसको पढ़ता नहीं है वो। तो पोल्टू बिल्टूदा का किताब अभी मत पढ़ो, पहले अगर आपको लगता है कि आपका एनसीईआरटी डाइजेस्ट हो गया है और आपके पास में टाइम है, तब जाकर के वहां पर इन्वेस्ट करो। बेकार, और मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है, इफ यू आर नॉट रीडिंग एनसीईआरटी बुक एंड इफ यू आर रीडिंग ABCDEFGH बुक, अब नॉर्मली प्राइवेट ट्यूटर्स लोग बोल देंगे आप ना वो किताब पढ़ो, आप ये किताब पढ़ो, आप वो किताब पढ़ो, मतलब ABCD किताब पढ़ो। अरे मेन किताब वो पढ़ता नहीं है, जहां से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है, जहां पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो किताब पढ़ता नहीं। क्यों पता, लेट मी टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू टुडे वन थिंग, जस्ट वेट। Okay, let me show you something. Okay, this is the NCERT book of physics class 12. इसका पहला कवर पेज फट गया है। तो ये किताब कलरफुल नहीं है, कलरफुल नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। दिस बुक इज नॉट ब्यूटीफुल, बट दिस बुक इज वेरी वेरी हाई इन कॉन्सेप्ट। एंड let me show you, this is NCERT volume 1. What is the thickness of this book? It has around, let me show you, tell you, it has around 500 total. NCERT volume 1 volume 2 has 540 pages. Now let me tell you, this is a book. मैं खरीदता नहीं हूँ, ये सब किताब मैं खरीदता नहीं हूँ, मेरे को गिफ्ट भेजता है। जितने भी बड़े बड़े पब्लिशर्स है, they send these books, which the cost of this book, one book is, let me tell you, this book costs around 1200 rupees. Okay, yeah, 1200 rupees एक बुक का, ये एक बुक का दाम है ये। Sorry, see the price, 1500, you can see here, 1590 here it is written, 1590. कलरफुल बुक, कितना मोटा, इट्स हेवी, एक्सरसाइज कर सकते हैं लाइक दिस, वी कैन डू एक्सरसाइज, ठीक है। अब नॉर्मली ट्यूटर क्या सोचता है, अरे भैया इतना मोटा किताब तो इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान, इतना मोटा किताब है, इसमें कितना पेज है, लेट मी टेल यू, नंबर ऑफ पेजेस आर लाइक समथिंग लाइक 1039 पेज इन दिस वन बुक, एंड देयर इज अनदर बुक, दिस इज वॉल्यूम 1, अनदर बुक, तो 1000 पेज वहां, तो 2000 पेज, 2000 पेज, 1000 पेज मींस 11th का 500 पेज, 12th का 500 पेज, 1000 पेज। अब ये उल्लू के पट्टे समझते क्या नहीं है, ये बुक में क्या रहता है, क्वेश्चन सॉल्व रहता है, इसमें क्वेश्चंस रहता है। उसमें रख लो मैंने एक एक चैप्टर से 400 क्वेश्चन डाल दिया, तो मेरा बुक तो इतना मोटा तो हो ही जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक जो है ना नॉलेजेबल किताब है, ये बहुत नॉलेज है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी, वो एनसीईआरटी में जितना थ्योरी होता है वो किसी किताब में नहीं रहता है। नो बुक इन इंडिया हैज द डिटेल्ड थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस नहीं रहता है, जस्ट सॉल्व तो नहीं रहता है, वो तो जस्ट 2 एक्सरसाइज रहता है, लेकिन वो 2 एक्सरसाइज ऐसा रहेगा आपको रुला देगा, उतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है उसमें।
अब ये किताब क्या हुआ, इसने क्वेश्चंस भर के रख दिया, तो वो क्वेश्चंस भरा है इसलिए ये किताब इतना थिक हो गया। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, इवन अनफॉर्चुनेटली टीचर्स का भी यही हाल है, वो सोचते हैं कि ये किताब ज्यादा अच्छा है, वो ब्यूटीफुल किताब है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, एंड दिस बुक्स लुक अगली, अगली किताब, अगली, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आता इसको देख के। लेकिन भैया यही असली किताब है। लेट मी टेल यू, आपका जैसा जैसा एक एक चैप्टर होता रहेगा ना, मैं आप इंडिया का कोई भी किताब, वो छाया प्रकाशनी, आई थिंक सृजनी इज देयर, लेट मी टेल यू, छाया प्रकाशनी इज द वर्स्ट बुक इन क्लास 11th एंड 12th। वो बुक का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, एब्सोल्युटली नो स्टैंडर्ड। मैं तुमको अंडरलाइन करके दे दूंगा, मैंने पब्लिशर को लिख के भी भेजा था कि उसमें ऐसा ऐसा एक दो ब्लंडर मिस्टेक डाल के रखे हैं और उन लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। मिस्टेक्स इतना बड़ा बड़ा, मतलब एनसीईआरटी जो बोलता है कि ये चीज सही है, आप यही चीज लिखो, उसका उल्टा चीज लिखा गया है उस छाया प्रकाशनी का किताब में। अब उसको लिखा कौन है, एक पीएचडी डिग्री होल्डर। अब एनसीईआरटी का हु हैज रिटन द एनसीईआरटी बुक, लेट मी टेल यू। अब एनसीईआरटी का बुक जरा ओपन करना, आपको पता चल जाएगा कि ये किताब कौन लिखता है। इंडिया का जितना रिसर्च लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीएचडीज जो रिसर्च लेवल पे काम करते हैं, दे राइट दिस बुक, ओके। तो यहां पर कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होता है, लेकिन आप एक प्राइवेट राइटर की किताब से पढ़ रहे हो तो वहां पर एरर कुछ ना कुछ हो सकता है। दिस बुक इज 99.9% errorless, okay। So that's why I'm taking the opportunity to explain you that why NCERT books should be understood properly। जो और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, जेई मेंस या नीट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एनसीईआरटी। तो ये किताब आपके लिए एक महाभारत का किताब है, या बाइबल मान लो, इसको कुछ भी मान लो, दैट्स एनसीईआरटी। सो एंश्योर दैट आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आप जैसे जैसे आज जो मैंने बताया था, जो मैंने स्टेटस में क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू, आप इंडिया का कोई किताब में ढूंढ के मेरे को दिखा दो, यू फाइंड आउट एनी बुक इन इंडिया इन क्लास 11th एंड 12th। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था ना, क्वेश्चन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हैज शार्प किंग्स, इफ इट हैज शार्प किंग्स देन डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। शार्प किंग का मतलब क्या होता है, शार्प बेंड या सडन फॉल, सडन चेंज, उसका मतलब होता है किंग, उसको किंग बोलते हैं। बहुत जन को किंग का मतलब ही पता नहीं है, तो वो होता है। तो अगर सडन कोई चीज चेंज हुआ तो हम उसका कैलकुलस लगा के डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसके आंसर अभी नहीं बताऊंगा, मंडे बताऊंगा उसके आंसर, वहां पर दे दूंगा। बट लेट मी टेल यू, ये कॉन्सेप्ट आप इंडिया का कोई भी किताब में ढूंढ के मेरे को निकाल दो, नहीं लिखा है वो, कहीं पर नहीं दिखा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही वो छुपा हुआ है वो कॉन्सेप्ट। बट स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को क्योंकि ठीक से पढ़ते नहीं है, तो ये आंसर पता नहीं रहता है। अब यही क्वेश्चन क्या होगा, आईआईटी में आएगा, सेम क्वेश्चन वो आईआईटी वाला उठा करके देगा जेई एडवांस में। वो बोलेगा कि ये ग्राफ बना के दे देगा, उसमें एक सडन किंग दे देगा, किंग देगा कि बोलेगा 4 ग्राफ देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जिसका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा नहीं, उसको ब्रिज कोर्स, मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि कैलकुलस को कैसे यूज किया जाता है ग्राफ में, तो ऑब्वियसली ये सब बेसिक चीज है उसको पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस दैट द बुक लाइक एनसीईआरटी क्रिएट्स फॉर जेई एडवांस, जेई मेन, सीबीएसई, ऑल द दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब केवीपीवाई, लेट मी टेल यू, केवीपीवाई का जो एग्जाम होता है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। अब जिसको एनसीईआरटी का ग्रेस्प है एकदम, उसको मालूम है कि एनसीईआरटी मैंने हजम करके रखा हुआ है, तो फिर वो फ्लाई करके निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो एनसीईआरटी के अंदर ही में है, उसका मतलब उसका वो क्वेश्चन, मतलब एक एनसीईआरटी का थ्योरी है, उसके अंदर से मैंने क्वेश्चन बना के दिया। ये जो जेई मेंस का एग्जाम होता है, नीट होता है, आईआईटी होता है, केवीपीवाई होता है, ये सारा एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर बनता है, लेट मी टेल यू, वो एनसीईआरटी बुक को ओपन करके वहां से बनाते हैं क्वेश्चन। वो किसी पोल्टूदा या बिल्टूदा की किताब से नहीं बनाते। दे डोंट मेक द बुक क्वेश्चंस फ्रॉम पोल्टूदा एंड बिल्टूदा, बट दे मेक द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, एंड ऑफ कोर्स देयर ब्रेन। मतलब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर में मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, डाल दिया, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। दैट्स व्हाट आईआईटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो आप एक कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली कितना अच्छा समझ पाते हो फिजिक्स में, दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी एबल टू स्कोर हाई इन फिजिक्स और नॉट। लेट मी टेल यू, जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है, जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है, उसका नीट में बहुत हाई स्कोर जाएगा। लेट मी टेल यू, बायोलॉजी में तो बहुत जन स्कोर कर लेते हैं,
90 में से 80-85 क्वेश्चन बहुत जन कर लेते हैं, मतलब 2 साल एकदम जो बहुत मेहनत करके एनसीईआरटी कर रहे हैं वो 80 क्वेश्चन तो कर देगा, लेकिन उसका रैंक कौन डिसाइड करेगा? फिजिक्स का स्कोर। इवन इन जेईई मेंस द मार्क्स ऑफ फिजिक्स विल डिसाइड द रैंकिंग, बिकॉज मैथ्स में क्या है कि आप बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत मेहनत करो, आपका स्कोर आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स इज नॉट अबाउट दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। इन फिजिक्स आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। तो इतना सारा फैक्टर्स जो है आपको फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है। सो आपने अगर ये सब चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में कर लिया, आपको पता है ये सब चीज, देन ऑफ कोर्स फिजिक्स यू कैन स्कोर हाई मार्क्स इन फिजिक्स, एंड इफ यू स्कोर हाई मार्क्स इन फिजिक्स आपका ऑल इंडिया रैंक जम करके ऊपर चला जाएगा, वेरी ऊपर। अंडरस्टूड? Okay, so these things are very very important. Time to time I will keep on guiding you कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या होना चाहिए फॉर जेईई मेंस एंड नीट। जस्ट पढ़ाई करने से नहीं होगा, टेक्निक्स है, स्मार्ट प्लान वो मैं बता दूंगा, प्लानिंग आपको बता दूंगा, हमारे बाकी टीचर्स भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देंगे कि जेईई के लिए आपको क्या करना है, नीट के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ोगे। एवरी टीचर आर ट्रेन्ड हियर, so they will tell you about these things. Okay, now let's move to another question on error, because we are ending to the topic of error. Okay, next question, write down. The radius of a sphere, the radius of a sphere, the radius of a sphere is measured to be is measured to be is measured to be r equals to 3.5 plus or minus 0.5, r equals to 3.5 plus or minus 0.5 centimeter. Okay, centimeter. Calculate the surface area, calculate the surface area, calculate the surface area with error limits, calculate the surface area with error limits. The radius of a sphere is measured to be 3.5 plus or minus 0.5 centimeter. Calculate its area with error limits. Okay, now, so here this is r and this is del r. So what is the surface area? Formula for surface area of sphere. What is the, can anybody tell me what is the formula for surface area of sphere? Surface area of sphere. Tell me. Formula for surface area of sphere. Quick. What is the formula for surface area of sphere? Yes, 4 pi r square. Okay. So surface area formula is 4 pi r square. Now here, first of all, find out the surface area. 4 into 22 by 7 into what is radius? R is 3.5. So 3.5 into 3.5. इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, you just watch. So 3.5 into 3.5. Now, if you multiply all this, we will get 154 centimeter square. After multiplication, we will get 154 centimeter square. Okay. Now, so this is the surface area. Now, surface area, if I consider it to be S, then according to the formula of error, del S by S equal to, now 4 pi. 4 pi is just a constant. Okay. So since 4 pi is just a constant, so here r square means 2 delta r by r. 2 delta r by r. Let me tell you, if you have r cube, in error, it will become 3 delta r by r. If you have r to the power 5, then it is 5 delta r by r. So whatever is the power, you have to multiply the power and then del x by x. So that is the way we solve it in error in case of exponents.
I have told about addition, subtraction, multiplication, division, and this is a question that requires application of exponents. So यहाँ पर साइड में आप लिख करके रखो exponents means if it is x to the power a, then a del x by x. So this is the formula. X to the power a is equal to a del x by x. So here r square means 2 del r by r. Okay. Now del s we do not know, but s we have found out 154. Now 2, what is del r? Del r is 0.5, and what is r? R is 3.5. Okay. So let me solve this. Then del s equal to, just solve it. 2 into 0.5 by 3.5 multiplied by 1.4. So we will get after solving it, we will get 1 by 3, yeah, 2 by 7. We'll get 2 by 7 after solving it. We'll get 2 by 7. Okay. Now what is del s? Del s equal to 2 by 7 into 154 into 154. So that will mean 7 to the 40. 7 to the 40. 44. So I am getting del s equal to 44. I am getting del s equal to 44. Okay. So we have got the value of del s. That is 44. Now, what is the surface area of the sphere? Now, surface area of the sphere is nothing but, we know that it is del s plus or minus s. So del s is 44 plus or minus s. So what was s? S was 154. Or in fact, write it in proper manner, s plus or minus del s. So our s is 154 plus or minus del s is 44. Okay. So the surface area with error limit is 154 plus or minus 44 centimeter square since it is area. Okay. So this is the surface area of the sphere with error limits. So what we have done, first we have found out delta s, and then we know the formula will be s plus or minus delta s. S we have already found out, it is 154. So s plus or minus del s, s is 154 and del s is 44. So that is your answer. So remember this particular formula, the fifth formula for exponents. If you have anything x to the power a or x to the power n, then multiply the power divided, then del x by x. Clear? You can note it down, and then after noting it down, tell me, because I'll do one more question. I'll solve one more question and then I'll give an assignment today from the study material. I'll upload it in the assignment section, and you will show it before the next week, because I'm going to give you something like 20 questions at least. Okay, more than 20 questions maybe. So in the section of dimension as well as errors. So from the two sections, you will get around 20 to 30 questions. So you can submit it by next week, means next before next Thursday's class. Today is Saturday, so you have sufficient time to solve it. And it will be uploaded in the okay, assignment section. No problem. I'll upload it in the assignment section. And all the students will upload the answers in the assignment section only. Submit it. Don't WhatsApp me. It is difficult to check a WhatsApp, but if you upload there, then I will be able to check the question, your answers. Then I can give the marks. जहाँ पर गलत हुआ है उसको mark कर दूंगा. So everything can be done. And then I'll give you the marks. And also keep an eye on the group, because next you will have a test on perhaps mathematics online. Standard will be of JEE Mains.
then there will be another test of chemistry, and then it will be followed by biology. Through the app, Trigger Exam app, okay, you can either appear in the exam, that JEE Mains NEET level exam, through the Trigger Exam app, download it on your mobile, or you can visit our website, Emerald Guidance website. If you are appearing in laptop or computer, if you appear in laptop or computer, it is advisable you go to Emerald Guidance website. From there you give the exam, because then you will be able to see the actual interface of the JEE Mains or NEET level exam जैसे actually होता है वैसे ही वहां पर दिखेगा. In mobile, actually you will not get the full interface, you will only get the question, okay, and the options. So those who have the computer or laptop, you can appear through our website. So is this question over? Okay. Now I'm rubbing it, and then I'll do one more question. And tell me if you have any difficulty in using the app, etc., because I have to tell to the technical team if students are finding any difficulty, like quality of video, sound, and other facilities that you are getting in the app. Okay, your next question, write down. I'll solve this problem. Okay, easy, very easy problem. A physical quantity is measured. A physical quantity is measured by the relation. A physical quantity is measured by the relation x equals to a physical quantity is measured by the relation x equals to a square b cube divided by root over cd. X equal to a square b cube by root over cd. Calculate percentage error. Calculate percentage error. Calculate percentage error in A, B, C, D. Comma comma देख लिखना. Calculate percentage error in A, comma B, comma C, comma D. If their values are 2%, 3%, 4%, and 5% respectively. 2%, 3%, 4%, and 5% respectively. Okay. So A, B, C, D has 2%, 3%, 4%, and 5%. Means A का value 2%, B का 3%, C 4%, and D 5%. Find the percentage error. So let me solve. X equal to a square b cube divided by root over cd. Now write it in this form. A square b to the power 3 divided by root over cd means cd to the power 1 by 2. cd to the power 1 by 2. Okay. Now del x by x equal to, देखो यहाँ पर ध्यान से, a square means 2 delta a by a plus b cube means 3 delta b by b. I am using the exponent, means calculation of exponents in terms of errors. So a square is 2 delta a by a, b cube is 3 delta b by b, plus, because error में सब कुछ प्लस ही होता है, so plus root over cd here. So root over cd means here इसका पावर कितना है, half. So 1 by 2 delta c by c plus 1 by 2 delta d by d. So this is how we write down. See,
how I have written the formula. A square is 2 delta A by A. B cube is 3 delta B by B plus, although it is in denominator, because we know in error, whether it is numerator or denominator does not matter, whether it is product or not, it does not matter. Okay, so it is 3 delta B by B plus half delta C by C plus half delta D by D. Okay, power is half, so half delta C by C plus half delta D by D. Now you can see the error percentage is already given. Okay, so error percentage we will find out delta X by X into 100% into 100%. So delta A by A, what? Delta A by A is 2%. So 2 into 2. Remember, don't 2% means don't multiply 2 into 2% is 2 by 100 उसे multiply मत करना क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 multiply कर दिया. So delta A by A is 2% means 2 plus 3. Delta B by B is 3 plus half. Delta C by C is C. C means this one 4. That is into 4 plus half. Delta D by D is 5. That's it. Finish. बहुत ही easy है. बहुत ही easy. हमने क्या किया इसको? What I have done? Delta A by A is 2. Delta B by B is 3. Delta C by C is 4 and delta D by D is 5. Okay. Now just solve it. That is 4 plus 9 plus 2 plus 2.5. So 9, 10, 11, 15, 17.5 we are getting. Wait, 4, 9, यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है यहीं पर. Oh sorry, this one is 2%, 3%, 4% और ये 5% नहीं होगा, ठीक है? This is not 5%, this is actually 1%. Correct it. Last one is D. D is 1%. So 1% means 1. Okay. So this means it will be 0.5. So 15.5%. Answer is 15.5% here. So that is your answer. That's it. 15.5%. So whenever you have exponent, you use this method. Power को सामने multiply कर दो, and then delta A by A plus delta B by B just. और यहाँ पर 2%, 3% जो भी हमारा वैल्यू दिया है वो डेल्टा ए बाई ए का वैल्यू दिया है. दिस डेल्टा ए बाई ए इज परसेंटेज. हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन डेल्टा एक्स बाई एक्स इनटू 100%. दिस मींस डेल्टा ए बाई ए इज 2. इसको 100% मत कर देना. डेल्टा बी बाई बी इज 3. डेल्टा सी बाई सी इज 4. डी बाई डी इज 1. जस्ट इसको सॉल्व कर दो, आ गया आंसर. Over? Understood this one? Okay, good. Note it down. And I think there is some internet problem right now in my side, from my side actually. I've got a notification here. So our class is over, in fact, almost over. So error is finished. Okay. Only one topic is left in this chapter. We will cover that in the next week, which is significant figure. It will only take 15 minutes to take the class. 15-20 minutes. We'll solve 1 or 3, 4 problems. It will take around 15-20 minutes. And then we will be able to start the new chapter, motion in a straight line. And before we start motion in a straight line next week, I will advise all the students to go through the portion of differentiation properly from the bridge course. Okay, because now it will be used throughout your course from chapter 3 onwards. That is motion in straight line. From motion in straight line, we are going to use calculus throughout your syllabus. Okay. So for today's class, I conclude it here. And remember, I will upload the assignment और उसके लिए मैं डेट दे दूंगा आपका अगला हफ्ता तक. तो अगले हफ्ते के अंदर में आप एरर और डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा. उसको आप सॉल्व करके वहीं पर सबमिट कर देना. आई विल चेक इट. चेक करने के बाद मार्क्स भी आपको दे दिया जाएगा उसमें. ओके.
So thank you for today's class, and I hope you have understood the class and the class was good. अच्छा, और एक चीज तुम लोग रेटिंग देना जरा, ग्रुप में रेटिंग दे देना कि ये पूरा क्लास आपको कैसा लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एज ए टीचर वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल एनीथिंग, टीचर कैसे पढ़ा रहा है. अच्छा, उसके उसके लिए मैं आपको, अभी तो ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं हुआ है, जब ऑफलाइन होगा आपको एक एक पेपर दिया जाता है, उसमें हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप टीचर्स को रेट करो कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कितना समझ आ रहा है आपको. उसके लिए रेटिंग आपको देना पड़ता है टीचर्स को. तो आपके रेटिंग के ऊपर ही टीचर्स पढ़ाते हैं. दूसरा चीज ये है कि अभी आप एक चीज बताना मेरे को कि इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन द ऑनलाइन क्लास व्हेन वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर ऐप, ओके, टीचमेंट ऐप, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है टेक्निकल, यू लेट मी नो. मेरे को बता देने से बस है वो. मैं बाकी टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट, या आप इंडिविजुअली उस टीचर को भी बता सकते हो अगर कोई ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. आई थिंक अभी मैं ट्रायल बेसिस पे था ये ऐप में. मैथ्स टीचर हैज आल्सो स्टार्टेड दिस ऐप. Very soon chemistry and biology will also be conducted through this app only, because now I am on the trial period. Okay, तो इसमें फैसिलिटीज वगैरह क्या है चेक कर रहा हूँ, तो उसके बाद में हम लोग इसको परमानेंटली, इनफैक्ट हो गया है, रख लो. अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस ऐप. ओके, ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.